भारत की 136 साल पुरानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने अपनी खदान टीम में पहली बार प्रशिक्षण महिलाओं को शामिल किया है। वैसे तो ये मंदिर का काम बहुत ही साहसिक माना जाता है और अब इस काम में महिलाओं की भागीदारी शामिल है, वो पुरुषों से कम नहीं है। ऑरेंज ड्रेस पहने दृढ़ संकल्प से भरी ये महिलाएं इतिहास रच रही हैं। भारत की 136 साल पुरानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने अपनी माइन रेस्क्यू टीम में पहली बार इन प्रशिक्षित महिलाओं को शामिल किया है। वैसे तो ये खदानों का काम बहुत साहसिक माना जाता है और अब इस काम में महिलाओं की भागीदारी दिखाती है कि वो पुरुषों से कम नहीं हैं। धुएं से भरी सुरंगों में नेविगेट करने से लेकर जहरीली गैस के माहौल को संभालने तक ये महिलाएं अब भूमिगत और खुली खदानों में आपात स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगी। We have our strong rescue teams with 500 members. Now, Singhani has started inducting management training and all women officers. We are giving equal opportunity in mining, personnel, finance, and all departments. So we have started recruitment of the women employees, and we felt women are also competent, equivalent to the women, and they will be working in underground mines and open cast mines. And first time in India as a PSU, we want to run one underground mine and one open cast mine with the women employees. 13 महिलाओं ने हाल ही में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। उन्होंने कोलियरी के रामगुंडम 2 माइंस रेस्क्यू स्टेशन में 14 दिन की अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। In the recent past, women are getting employment in Singareni colleges. So, as a part of safety and the women employees are selected for training in initial rescue. So, they have undergone rescue from 14th of June to 4th July. Total 13 employees were trained. उनके प्रशिक्षण में फिजिकल ट्रेनिंग, इमरजेंसी सिमुलेशन, कृत्रिम रूप से सांस लेने वाली मशीनों का उपयोग और हाई रिस्क वाली परिस्थितियों में रिकवरी टेक्निक्स शामिल थीं। I have done my 14 days training at Mines Rescue Station RG2 and I have learned many things from the station. Here I have learned how to save a life in the mines where dangers occur and how to recover a person from the dangerous place and how to deal with the dangerous gases around that danger place and how to save a person's life or property life in the mine and out of the mine also. फिज़िकल, मेंटल एंड हेल्थ का हर एक मेंटेनेंस करते। पहले फिज़िकल बोल तो मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 8 तक। मॉर्निंग 6 बोले तो हम हर एक मॉर्निंग जॉगिंग रहता, वॉकिंग रहता और परेड रहता एंड एज वेल एज मेडिटेशन भी रहता है। ट्रेनिंग ले चुकी महिलाओं का कहना है कि इस अवसर ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का एक नया रास्ता खोल दिया है। నేను చాలా కంపెనీస్లో చూశాను, ఎస్జెడ్ఎల్ కానీ డబ్ల్యూసిఎల్ కానీ ఆ కంపెనీస్లో రెస్క్యూ టీము ఉమెన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు, జోనల్ కానీ నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ. బట్ సింగరేణిలో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్లో ఎంటీస్ని తీసుకున్నారు. ఎంటీస్ అండ్ సూపర్వైజరీ క్యాడర్ అండ్ టెక్నికల్ క్యాడర్ వాళ్ళని తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ టైం ఫీమేల్స్ని తీసుకున్నారు. సో దట్ ఇందుట్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ని పిలిచారనమాట ట్రైనింగ్కి. సో దట్ నేను ఇంట్రెస్టెడ్, సో నేను వెళ్ళేసి ఆ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇనీషియల్ రెస్క్యూ టెస్ట్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేశాను. कंपनी रामागुंडम रेस्क्यू स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जो पूरे भारत की आपदा प्रतिक्रिया टीमों को प्रशिक्षण देने में सक्षम हो सकेगी।